Hey everyone, so this is the third video of the work The Empire Writes Back, and in the previous video we were discussing the second question, how did the empire wrought back, or how the countries who were once colonized wrought back to the empire. कि कैसे वो जो colonized countries थी, जैसे जिन पे कब्जा था कभी किसी टाइम पे किसी बड़ी कंट्री का, किसी पावरफुल कंट्री का, जैसे ब्रिटिशर्स का, यूरोपियंस का, उन्होंने कैसे उन्हें जवाब दिया. तो उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए we have reached to the fourth point, which is writing as resistance, which means writing को यूज़ करना फाइट बैक करने के लिए, फॉर अनफेयर, फॉर रॉन्ग डूइंग, उस चीज़ के लिए. तो राइटिंग एज रेजिस्टेंस, writing became a way to fight back without weapons. These writers exposed the cruelty of colonization, the pain of cultural loss, struggles of independence. कि वो जो राइटर्स थे, जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स थे, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में जो कॉलोनाइजेशन के टाइम पे जो अनफेयरनेस हुई थी, जो क्रुएलिटी हुई थी, उसे एक्सपोज किया. एग्जाम्पल, मुल्कराज आनंद जो इंडियन राइटर है, हिज वर्क अनटचेबल हाईलाइट्स कास्ट ऑप्रेशन इन इंडिया. कि कास्ट को कैसे देखा जाता था, कास्ट, लोअर कास्ट, हाउ दे वर अप्रेस्ड, हाउ दे वर ट्रीटेड, बैडली ट्रीटेड, उसे बताता है. ठीक है, ये वर्क अनटचेबल. नाउ द सेकेंड वर्क इज जीन रीस वाइट सरगासो सी रीराइट्स जॉन आयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉलोनाइज्ड वुमेन शोइंग हर ह्यूमैनिटी. कि ये जो वर्क है, ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी वो कैसे ब्लैक वुमेन को या ब्लैक पीपल को ट्रीट करती थी. क्योंकि इसमें जो इस वर्क में जो लेडी है बर्था, वो एक ब्लैक वुमेन है और उसकी ह्यूमैनिटी को दिखाया गया है. सो to conclude, according to the Empire Writes Back, once colonized countries wrote back by using literature to correct colonial narratives, reclaim their identity, and rebuild their culture. They turned the language of colonizer into a powerful tool of their own voice and wisdom. The fourth question, the third question. The third question is, what are the political implications? Political implication means effects on power, effects on government of the expression the empire writes back. इस टाइटल का, इस वर्क का क्या पॉलिटिकल तौर पे अफेक्ट हुआ है, वो हमने स्टडी करना है. एंड इट ऑल्सो केम इन द एग्जाम. सो द आंसर इज, द फ्रेज द empire write back is not just about literature, but it has strong political meanings too. It shows how once colonized countries use writings to change and challenge the power, control, and ideas of colonial empires. The phrase itself is a pun, a play of words. कहते same words but has different meanings. On the title, the empire strike back, showing how former colonies now strike back, are now answering back through their own voices. The very first political implication is that, जो सबसे पहला political implication है वो है, they challenge the power of colonial empire. Colonial powers used literature, education, and language to control colonized nation. For example, when Britishers came to India, they decided that what to teach, in what language to teach, and हाउ मच टू टीच एंड होम टू टीच. कि कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, किस लैंग्वेज में सिखाना है, उन्होंने ये चीज़ें करी थी. सो इसके बाद क्या होता है, दे स्प्रेड द आइडिया दैट द वेस्ट वॉज सुपीरियर, कि वेस्ट सुपीरियर है एंड नेटिव कल्चर्स वर इन्फीरियर, नेटिव इन्फीरियर है. एंड व्हेन पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स राइट बैक, दे ब्रेक दिस मिथ. उन्होंने जब दोबारा राइट बैक किया, and they showed that we are not actually how you presented us. They presented their true cultures, their true religion, their true values, and exposed the lies of colonial rule. तो ये चीज़ हुई. तो फर्स्ट पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि इट क्वेश्चंस द अथॉरिटी एंड डोमिनेंस ऑफ द वेस्ट एंड डिमांड्स जस्टिस एंड recognition for colonizations. Second political implication, the heading is Reclaiming Identity and History. Colonial rulers wrote history from their point of view. They ignored or erased native histories. Writing back means that colonized nations now reclaim their post
post and past, tell their own stories and recover their identity. Political implication number 2, उन्होंने अपनी रिक्लेम तो किया आइडेंटिटी बाय राइटिंग द ट्रू वर्जन ऑफ देयर सेल्व्स. इट लीड्स टू द रीबिल्डिंग. इसने पॉलिटिकल लेवल पे क्या हुआ कि रीबिल्ड हुआ किस चीज़ का, नेशन का. उन्होंने अपने नेशन को दोबारा से बिल्ड किया. जो पुअरली प्रेजेंटेड नेशन था उसे दोबारा से रीबिल्ड किया, अपने ट्रू आइडेंटिटी को रिक्लेम किया, अपनी पोजीशन चेंज की नेशनल लेवल पे, कल्चरल स्ट्रेंथ बढ़ी, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई इन पोस्ट colonial nations. Number 3, language as a political tool. The colonizers used English and other European languages to spread their rule, and post-colonial writings often mix English with native languages to show that they can now control the colonizers' language and use it for their own truth. तो उन्होंने क्या किया, जो आफ्टर पोस्ट कॉलोनाइजेशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो जिन्हों कॉलोनाइजिंग कंट्रीज, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया अपनी, दे यूज्ड इट फॉर their own power. They use English language, and but they did change it a bit to express their own true culture, to express their voice, and they made it their voice actually. Political implication number 3, this act of transforming the language shows resistance and a shift in power from colonizers to colonized. Means they wrote in English language, but they hybrid it, they changed it, they mixed English language with their native language in writing, and they showed that our writing also as important as yours, our language is as important as yours. So once they start writing in their own languages and they mixed it with English language, what it showed that we both, that our language is also important, and now we also have some control. Fourth one is giving voice to the marginalized. Marginalized means marginalized means who are badly treated, who are जिन्हें छोटा समझा जाता था, marginalized, who are not given much importance. उन्हें एक voice मिली है इस work के through. They express their own voice through the work the empire writes back. Under colonial rule, the voices of native people, women and the lower classes were often silenced. Colonial rule में ये होता था कि women की आवाज़ नहीं है, lower classes को बोलने का हक नहीं है, but in post-colonial writings brings those voices forward and tells the world about the real struggle, suffering and resistance of these people. Political implication number 4. It fights for equality, human rights and political freedom, both in literature and in real life. Fifth, shaping a new world order. एक नए वर्ल्ड की शुरुआत होती है, को शेप दिया जाता है इस वर्क के थ्रू पॉलिटिकल लेवल पे. राइटिंग बैक इज़ नॉट ओनली अबाउट रिएक्टिंग टू द पास्ट, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू विजन ऑफ फॉर द फ्यूचर वेयर ऑल कल्चर्स आर रिस्पेक्टेड एंड हर्ड इक्वली. नेशनल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे सारी कल्चर्स को इक्वालिटी मिलनी चाहिए. पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नंबर 5, इट हेल्प्स टू बिल्ड अ मोर बैलेंस्ड एंड जस्ट ग्लोबल सोसाइटी. मोर बैलेंस सोसाइटी, नॉट द वन डोमिनेटेड बाय फॉर्मर एम्पायर्स. पॉलिटिकल लेवल पे इस वर्क ने प्रूव किया है अपने आवाज़ से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी राइटिंग से कि हमें एक बैलेंस्ड सोसाइटी की ज़रूरत है, ना कि किसी ऐसी सोसाइटी की जो किसी भी कंट्री के द्वारा कॉलोनाइज्ड हो. वी नीड रिस्पेक्ट, वी नीड इक्वालिटी, एंड दिस इज हाउ दिस वर्क politically affect the government. Now, to conclude, the expression "the empire writes back" carries powerful political meaning. It's about taking back power को वापस लेना, challenging injustice को challenge करना, and creating a new identity. So this is how it challenges, and we discussed the political implications of the expression "the empire writes back." Thank you.